the Fast Track Defense channel. In this video, I am going to talk about how many times you can appear for the SSB interview. जैसा कि आप सभी को पता है कि SSB interview is the interview which is done to select the Indian Armed Forces officers or to recruit you in the Indian Armed Forces as an officer. So this video will help you a lot. All the candidates, those who are preparing for SSB, जितने सारे एस्पिरेंट्स हैं या फिर NDA के एस्पिरेंट्स या फिर CDS के एस्पिरेंट, AFCAT, TGC या फिर आप कोई अदर एंट्री से अगर आप SSB देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अब हम बात करते हैं, कोई भी जब एस्पिरेंट्स डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करता है तो उसके मन में एक ना एक डाउट तो जरूर आता होगा कि आखिर वो SSB के कितनी बार दे सकता है, अपनी पूरी लाइफ में वो कितनी बार SSB दे सकता है। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ मेनी टाइम्स यू कैन अपीयर फॉर द SSB इंटरव्यू। So stay tuned in this video till the end and share this video in all of the WhatsApp group, all of the Telegram groups in which you are added. मैं आप सभी से एक विनती करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने पूरे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स, सारे जो डिफेंस के जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प होने वाला है। उनके मन में जो डाउट है कि वो कितनी बार SSB दे सकते हैं, वो सारे डाउट्स को मैं आज की इस वीडियो में ख़त्म करने देने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट विथ आवर वीडियो। सो द फर्स्ट एंट्री इज एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एंट्री, जिसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कि हम बात करते हैं NDA एंट्री, जो कि 10+2 के लेवल पे होता है, 12th के लेवल पे होता है। इसमें आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जो कि UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, 900 मार्क्स का होता है। जब आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करेंगे तो आपको SSB देना पड़ेगा, जो कि फिर से 900 मार्क्स का होता है। उसके बाद मेडिकल्स होती है, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग होती है। So this is entrance exam based entry. First entry is NDA entry. Second entry is CDS entry. CDS entry is for graduates, those who have done graduation in any of the field, BA, BSc, BCom, BTech, MBA or any of the field. For them, CDS and AFCAT entry. AFCAT is to recruit Indian Air Force officers. AFCAT stands for Air Force Common Admission Test. So AFCAT entry is only to the entry into the Indian Air Force. Similarly, यहाँ पे CDS is to admission into the Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force, or be it OTA, INA, in all the forces. There is another one entry only for Navy candidates, that is INET entry, INET, Indian Naval Entrance Test, and this test is applicable only to the BTech graduates. Those who have done engineering in their graduates, this entry will help only to them to appear in the SSB interview. So here are the 4 ways of entrance exam based entry. So you can appear in any number of times. There is no limit to appearing in the SSB interview. You can appear in the SSB interview as long as you are eligible to apply, as long as you have the age limit to apply, as long as you are qualified to apply. You can appear in any number of SSB interview. There is no limit to attending a SSB interview. So these are the entries which are entrance based. Similarly, if we talk about that, if you want to go through technical entry for the SSB interview, then you have 10+2 TS entry, which is again conducted 12th standard based. If you have done 10+2 with physics, chemistry and math, and if you have qualified JEE examination, then you can apply for the 10+2 TS entry, and this entry is only for the army. अगर आप 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से किए हों और अगर आप JEE क्वालिफाइड हो तो आपके लिए ये 10+2 TS एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक एंट्री और है 10+2 नेवी बीटेक एंट्री, जो कि अगेन 12th स्टैंडर्ड के बेस्ट पे है। यहाँ पे भी आपको 12th में PCM होने चाहिए और उसके बाद आपको JEE क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप ये 2 एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं TGC एंट्री और UES एंट्री, TGC स्टैंड्स फॉर टेक्निकल ग्रेजुएट कमीशन, UES स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। ये दोनों जो एंट्री है TGC और UES, these both entries are only for graduates, those who have done graduation in BTech, those who have done engineering in their graduation, they can apply for the TGC entry and UES entry. So जब हम बात करते हैं टेक्निकल एंट्री तो you can apply for these 4 entries, and again there is no limit
that you can apply for 1 time, 2 time, 3 time, 4 time. You can apply n number of times in technical entry also. So in entrance based you can apply n number of times, in technical entry you can apply n number of times, until and unless you are eligible to attend the SSB interview, until and unless you have the age limit, you are qualified for the SSB interview, you can appear in the SSB interview. There is no limit to it. Similarly, if we talk about few more entries, that is NCC C certificate entry. If you are having NCC C certificate, if you are holder of NCC C certificate, then you can apply for NCC entry also. Every year twice this vacancy comes. And another one is SSC Tech entry. This entry is for short service commission technical entry, and this entry is also only for the engineers. Those who have done graduation in BTech or BE, they can apply for the SSC Tech, and this entry is short service commission, and joining of SSC takes place in OTA Chennai. So if we talk about another entry, that is called सर्विस एंट्री. सर्विस एंट्री एक ऐसा एंट्री है जो कि ऑलरेडी आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स में एज ए सर्व कर रहे हैं. In army if they are serving as soldier, and in navy if they are serving as a sailor, and if in air force they are serving as airman, then for them these two entries are very much important entry, that from soldier to officer. That means you can say that this entry will make you from soldier to officer, airman to officer, sailor to officer. So these entries are only for the service entry candidates, that is ACC entry. ACC stands for Army Cadet College entry. This entry is again only for the airmen, sailors and soldiers in the Indian Defence Forces, those who are already serving, and you should have minimum 2 years of service before applying for ACC entry, and based on your age limit you can apply for the ACC entry. Similarly, if we talk about ACC entry, SEC stands for Service Entry Commission entry. This is only for airman, that is if they want to become from airman to flying officer. That means if they want to get promoted in the same force, that is from air force soldier to air force officer, that is airman to flying of officer, then for them they can also apply for the SEC entry. So SEC entry again, if we talk about number of interview, जब हम बात करते हैं कि सर्विस एंट्री के लिए कितनी SSB इंटरव्यू होती है, अगेन हियर देयर इज नो लिमिट टू अटेंड द SSB इंटरव्यू unless you are eligible. Until you are eligible, until you have the age limit, you have the qualification, you can apply for the SSB and SEC entry. So friends, जब हम बात करते हैं few more entries, and this entry is only for the job doing personals. जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो कि खुद जॉब करते हैं, लेकिन उनको एक आर्मी का या फिर कोई और डिफेंस का एक एक्सपोजर लेना रहता है, ताकि वो मिनिमम 1 ईयर में 2 मंथ की सर्विस इंडियन आर्मी को डेडिकेट कर दें. तो उनके लिए टेरिटोरियल आर्मी का एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है. टेरिटोरियल आर्मी एंट्री जो कि 18 ईयर्स प्लस अप्लाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पे एज लिमिट है 18 ईयर्स टू 42 ईयर्स. एंड हियर ओनली द कैंडिडेट्स हु आर डूइंग जॉब, who are job doing aspirants, they can apply for the territorial army entry. जब हम बात करते हैं इंडियन टीम के फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, वो भी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है, जो कि अपने पूरे ईयर में 1 साल में मिनिमम 2 ईयर्स उनको इंडियन आर्मी में सर्व करना होता है एज ए सर्विस टू दी नेशन. सो फ्रेंड्स, अगर आपका भी सपना है कि आप एटलीस्ट 1 साल में 1 से 2 महीना आप इंडियन आर्मी के सर्विस में डेडिकेट करें, देन फॉर यू टेरिटोरियल आर्मी एंट्री इज द बेस्ट एंट्री. एंड हियर ऑल्सो देयर इज नो लिमिट टू number of entries. Here you have to appear in the examination which will be conducted by Indian Army. So here again one entrance exam is conducted, then SSB interview is taken, then again medicals is done, then you have the final merit list, then your joining takes place at Indian Military Academy. So friends, this was all of the total entry. So at the end I want to tell you, फाइनली मैं आपको एक बात यह बताना चाहता हूं कि फाइनली देयर इज नो एंड टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन गिव SSB इंटरव्यू. एज लॉन्ग एज यू आर एलिजिबल, you can appear for the SSB interview. So friends,
दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपके पास अभी भी डाउट है कि आप कितनी बार एसएसबी दे सकते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं कि यू कैन गिव एसएसबी एनी नंबर ऑफ टाइम्स unless you are eligible. Until you are eligible, you have the qualification, you can apply in the any entry. So friends, this was the end of the video. I hope all of you enjoyed the video. Thank you all of you for tuning till the end. Thank you. Jai Hind.